चलिए जी, अब जो हम बात करेंगे वहां पर टॉपिक का नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं देयर आर बेसिकली 3 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ एनी गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स द चैलेंजेस ऑफ मेकिंग लॉज, याद रखना, द challenges of conducting governance according to the laws, and the resolution of disputes between individuals or between individuals and the government. ठीक है, in every governance system measures are taken to address these 3 basic challenges. ठीक है, the 3 system through which these challenges are resolved are called organs of government. ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट याद रखना 3 है, कौन कौन सा, लेजिस्लेचर याद रखना, एग्जीक्यूटिव याद रखना और जुडिशरी याद रखना। ठीक है जी, तो लेजिस्लेचर में क्या लिखते हैं, द टर्म लेजिस्लेचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेक्स, ठीक है, विच मीन्स अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ लीगल रूल मेनली ऑफ जनरल एप्लीकेशंस। ठीक है, दिस रूल इज नेम्ड legislation and the institution which enacts it on behalf of the people is known as legislature. ठीक है, essentially there are 2 methods of legislative structure including the parliamentary and presidential. ठीक है, in the parliamentary model the executive is selected by legislature from among its own members. ठीक है, therefore the executive is responsible to the legislature. ठीक है, the presidential system is based on the theory of separation of powers and does not permit any person to serve simultaneously in both executives and legislature. ठीक है, in India the legislature exists at 2 levels. ठीक है, at the union levels, that is the Parliament of India, and the state level, that is state legislature. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव।